Namaskar. I am Dr. Anita Kant, and you are watching Dr. KK Med Talks Fridays with Dr. Anita Kant, non-stop 760th episode. Let's have the headlines of the day. Researchers detect toxic particles in the lungs, brains, and liver of unborn babies in the UK. Samsung is all set to screen 1,50,000 Indians with a unique artificial intelligence camera. Study finds dementia risk higher for Black people. Study reports that 1 in 20 have long term COVID effects. WHO Executive Board stresses the need for improved response to the mental health impact of public health emergencies. Let's go to the topic of the day. After finishing the trilogy of the 3 months division of pregnancy, हम अब बढ़ रहे हैं पोस्ट नेटल केयर मतलब डिलीवरी के बाद के केयर के लिए। आज के हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अमृता राजदान। डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर अमृता राजदान कौल एक सीनियर कंसल्टेंट हैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी में and she's a specialist in gynecological endoscopy at the Asian Institute of Medical Sciences in Faridabad. She's an honest, hardworking, and patient-dedicated doctor who manages DNB and a course in gynecology department at Asian Hospital. Her special interests are high-risk obstetrics and gynecology. Welcome, Dr. Amrita. Thank you for Thank you, being ma'am. with us. Thank you for the introduction. तो My आज pleasure, हम ma'am. डिलीवरी Always. के बाद का वो वाला महत्वपूर्ण पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें मदर को हेल्दी रहना है ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से फीड कर सके, हाँ जी। बच्चे के साथ अडेप्ट करना है, सारी फैमिली Right. मेंबर्स उस बच्चे को अटेंशन देना चाहते हैं और मदर कहीं Right. निग्लेक्ट ना हो जाए या ओवर प्रोटेक्ट बिल्कुल ना हो सही। जाए, ये हमारा मेन पर्पस है। सो सबसे पहले ये Right. पोस्टपार्टम पीरियड कितने दिन का होता है और इसकी इम्पोर्टेंस बताएं हमें। हाँ, ma'am, this is the 6 weeks following the post childbirth, which is the earliest postpartum period जो medically भी important होता है। Although अब तो WHO ने postpartum period को extend करके 6 months तक ले लिया है, but yes, this 6 weeks after the delivery of the baby are the immediate things to be attended in order to ensure both the short-term and long-term health and well-being of mother and the child. एंड जैसे आपने बताया कि एक ये अडेप्टेशन है, एक ट्रांजिशन है डिलीवर्ड फीमेल के लिए टू नॉट ओनली कि अपना रिकवर करे वो फ्रॉम दैट डिलीवरी पॉइंट एंड फ्रॉम इमोशनल जो टर्मोइल एक आता है, बट ऑल्सो टू अडेप्ट टू द मदरहुड एज यू हैव वेल सेड कि बेबी को ही अटेंड करना है, लैक्टेट है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड बहुत चैलेंजिंग रहता है डिलीवर्ड फीमेल के लिए एंड बिकॉज एवरी फीमेल एक्सपेक्ट्स कि जो न्यू बॉर्न आया है उसके बिसाइड्स उसको भी केयर मिले, और जैसे आपने बताया कि वो अटेंशन शिफ्ट हो जाता है न्यू बॉर्न को, तो थोड़ा सा वो एडजस्ट करना और वो डायनामिक्स एक्सेप्ट करना कि नहीं अब न्यू बॉर्न के साथ उसका फैमिली के साथ और पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, एक और चैलेंज रहता है फीमेल के लिए। So this postpartum period is so essential both for new moms and newborns to protect them from many health risks which can evolve in this postpartum period unless it is not well attended. You have said it truly. बिल्कुल सही बताया आपने। क्या ये 6 हफ्ते या 6 महीने के पीरियड में उस लेडी को जिसकी अभी डिलीवरी हुई है उसे पूरा रेस्ट लेना होता है, बेड रेस्ट? देखिए मैम, ऐसा है आफ्टर दिस होल टर्मोइल ऑफ डिलीवरी रेस्ट तो बनता है, बट इट्स नॉट एन इम्प्लाइड थिंग कि वो बेड पे ही लेट के रेस्ट, मतलब इट्स नॉट कि आप उठ के अपनी रूटीन एक्टिविटी नॉर्मल डे टू डे कोर्स आप नहीं कर सकती हैं। विद ईच पासिंग डे द मोमेंट यू फील बेटर मोर कॉन्फिडेंट, आप अपनी रूटीन एक्टिविटी में बिल्कुल आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ डिलीवरी, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन योर लेबर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सो फर्स्ट डे आप नॉर्मल डिलीवर हो गई, यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप, दैट्स ओके, आप अपने वॉशरूम फैसिलिटी तक का एक्टिविटी रखिए, आप बेबी को अटेंड कीजिए। देन विद ईच पासिंग डे यू start increasing your activity. Bed rest, it doesn't imply you have to be on the bed. Bed rest means
बिकॉज लैक्टेशन एक ऐसा पीरियड है जो 24/7 चलने वाला है. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन कंप्लीट रेस्ट ऑफ 8 hours. So whatever minutes you can just take out from attending to your baby सो रहे हैं, you also take a nap or you take rest. So these small minutes calculate, they account, and they make you to at least heal your body properly, to feel good about yourself. You don't fatigue out during the lactational hours. So bed rest doesn't imply कि आप total bed पे रहिए. This rest implies कि आप catch कीजिए वो period जब आपका baby सो रहा है, and try to give some time to yourself. आप जो बाकी household activities है, खाना बनाना है, बच्चों के टेंड करना है, run errands, आप किसी और को वो responsibility दे दीजिए, so that you are fit enough to attend to yourself, heal yourself properly, and attend to the baby's need of lactation, which is the must in the first 3 months of the pregnancy. So definitely bed rest is a part, but this rest implies कि आप adequately अपनी body को recover कर पाएं. And once this recovery is achieved, it is not mandatory you have to be on bed all the time. Then you know the transition, you adapt to the new thing, you can very well do whatever you want to do. आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकती हैं आफ्टर 6 weeks. आप अपना जो भी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हाउस होल्ड, आप बैक टू दैट गेन कर सकती हैं. सो आपकी डाइट जो होती है आफ्टर डिलीवरी नेचुरली आपकी हेल्थ के लिए और टू इंश्योर कि मिल्क भी हेल्दी और अच्छा और एडिक्वेट आए, तो उसमें क्या ऐड ऑन करना चाहिए, आप बताएंगे? Definitely. After this rest part, diet becomes another important part of this whole plan कि mother recover करे, simultaneously mother baby को भी compromise situation में ना डाले, उसका lactation adequate बना रहे. So this diet needs to be rich in at least 5 ingredients, जिसमें से सबसे important हमारा protein रहता है. Protein supplement, then milk food supplements, vegetables, plenty of fruits and veggies. और इस सारे डाइट का पैटर्न ये रहेगा कि आपका प्रोटीन सबसे ज्यादा होना चाहिए जो आपको बॉडी बिल्ड करेगा, आपके स्टिचेस को, वेदर इट इज अ वजाइनल डिलीवरी और ए सिजेरियन डिलीवरी, एपिजियोटमी जो वजाइनल डिलीवरी का वूंड रहता है, तो ये दोनों पार्ट्स को हील करने में हेल्प करेगा. साथ में आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन है, लैक्टेशन है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसको मेंटेन करेगा. सो डाइट में आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशियस चीजें लेनी है, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एंश्योर करेंगे कि आपको एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से आपको पौष्टिकता देंगे, ताकि आप विथस्टैंड कर पाए जो ये स्ट्रेस है, और किसी नई बीमारी को आप गेन ना कर पाए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डाइट में जो फैट का रोल है, that doesn't stand anywhere. Fat is not going to heal your body parts. Fat is just going to add fat to yourself until it is well broken down by your physical activity. So do remember to have more of the dairy products, especially milk and the supplements, so that you have more of calcium and protein to heal your body. और वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ही जरूरी रहता है मिल्क, फिर if they don't have the non-vegetarian source of protein and iron. ठीक है. तो एक टेंडेंसी रहती है कि आफ्टर डिलीवरी बॉइल्ड या ब्लैंड और सॉफ्ट डाइट दी जाती है, और बॉइल्ड एंड वार्म वाटर दिया जाता है, ये नेसेसरी है क्या? मैम, it was when the water used to be from resources, जैसे वेल से होता था या म्यूनिसिपैलिटी के टैप से होता था, और फूड में ऐसा होता था कि मतलब फीमेल्स यू डिडंट यूज टू हैव टू मनी ऑफ गुड एंटीबायोटिक्स या एंटासिड्स या बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब काफी एडवांस स्टेज में आ गई हैं. हमारे डिलीवरी के प्रोसेस खुद में बहुत ज्यादा सेफ हो गए हैं, और जो मेडिकेशंस का बैकअप है दैट इज बिकमिंग इवन बेटर एंड बेटर विद ईच पासिंग डे. So now all these myths are just myths. Our elders were very intelligent to, inculcate कि हाँ पानी को बॉईल करके दिया जाए. It was not कि पानी गर्म हो, it was पानी को बॉईल करके उसमें से सारी impurities सेपरेट करके तो ही मदर को दिया जाए, ताकि वो कोई इन्फेक्शन कैच ना करे और नई प्रॉब्लम में ना पड़े. Because this period is very sensitive to both the newly delivered female and the baby. But आजकल it's like kind of a blind faith कि बस ये पानी उबालना है. इट्स व्हाट्स देयर इन उबालना, एक आरओ और फिल्टर्ड वाटर को आप उबाल के क्या अचीव कर रहे हैं? सो इट्स नॉट कि आप फैट उसका डिसॉल्व कर रहे हैं, जो एक लोकल मिथ सा है. So please don't allow this practice to perpetuate. This is of no use. Make her to drink lots of water. This is of the purpose. The पानी पीना उसके हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये पानी उसका हाइड्रेशन मेंटेन करेगा, जो फीड इंप्रूव करेगा, उसको यूरिनरी इन्फेक्शन से बचाएगा, उसको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा.
ये दोनों challenges बहुत ज्यादा रहती हैं immediately डिलीवरी के बाद, यूरिन का इन्फेक्शन और कॉन्स्टिपेशन, और इसी की वजह से पेशेंट लैंड अप हो जाता है फीवर में. इट्स नॉट अबाउट कि उसने उससे बात कर ली, हवा घुस गई और फीवर आ गया. इट्स नॉट अबाउट दैट. आप आपका न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं कर रही है, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर रही है, यू आर इन्वाइटिंग जो आपके अपनी बॉडी के अच्छे ऑर्गेनिज्म है वो डैमेज होके आपके जो पैथोलॉजिकल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है आपको इन्फेक्ट कर रहे हैं. सो I will request on this platform to everybody, please don't propagate such practice. Let's be more sound, or we should appreciate what our elders used to do, scientifically correct thing. It's not blindly following something. बिल्कुल सही बताया आपने. और ये डिलीवर्ड मदर एक्सरसाइजेस कब से शुरू कर सकती हैं, चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन? हाँ जी मैम. सो जैसे हमने सबसे पहले बेड रेस्ट से स्टार्ट किया. सो बेड रेस्ट वाज मेंट देयर टू रिकवर फ्रॉम द इमीडिएट एग्जॉशन फ्रॉम अ डिलीवरी. बट इस बेड रेस्ट में भी आफ्टर अटेंडिंग टू योर हेल्थ केयर पर्सनल, डेफिनेटली he or she will guide you. There are some very basic core strengthening exercises जो उसी समय से हम शुरू करवा सकते हैं पेशेंट को, बिकॉज लेबर इज अ वेरी एग्जॉस्टिव प्रोसेस टेकिंग अ टोल ऑन द मसल्स ऑफ योर एब्डोमेन एंड ऑन योर पेरिनियम, लेग्स, थाइज, बैक. They go splitting up. और cesarean है again, because you are on bed for at least another 8 to 10 hours, still you get up from the bed. So cesarean itself demands कि आप उन core strengthening exercises को कीजिए. So they are very basic and simple exercises. And once you are up and above within 3 to 4 days, attending to yourself very confidently to the baby, then you can start increasing the frequency of these exercises. You can start, having a walk in your household for another week. और एक हफ्ते बाद जैसे आपको बेटर लगे, यू कैन स्विच ओवर द वॉक टू योर एनी नियर बाय पार्क और नियर बाय प्लेस, जो भी आप कंफर्टेबल है, बिकॉज इट चेंज ऑफ सराउंडिंग्स थोड़ा सा आपकी एनर्जी बूस्ट अप करते हैं. So these exercises are going to be increased in their intensity from mild to moderate, and then once you finish your 6 weeks after attending your health checkup routine, you're totally fine. You can switch over to any kind of even vigorous activity. आप gymming करें, आप swimming करें, whatever aerobics you want, you can go back and do that after this period of 6 weeks. But till 6 weeks, again, we recommend some exercises which are a must for you so that you can withstand your journey of transition to motherhood and your well-being simultaneously. So diet, nutrition, and exercise. So you are covering each point. Right? बिल्कुल सही, क्योंकि हमें आज पूरा जितना हो सके इस समय में पूरा ज्ञान देना है और मिथ बस्टर ज्ञान देना है. तो ये बताएं कि कुछ औरतों को ये लगता है कि डिलीवरी के बाद हमें अभी खड़ा नहीं होना, अभी हमें बैठना नहीं है. सो हाउ सून कैन अ डिलीवर्ड मदर स्टैंड एंड वॉक, और नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन दोनों के बारे में बताएं. आजकल मैम स्केयर बहुत ज्यादा हो गया है. लोग सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देखते हैं, आगे पीछे बहुत गॉसिप करते हैं, फ्रेंड से बात कर ली, इससे बात कर ली. Exactly. So this WhatsApp University, it makes you more scary about anything. ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. It's not like that. आप देखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, do go over there, but always discuss your things with your healthcare personnel or your gynecologist to make sure what is right and what is wrong. So the moment आपकी normal delivery होती है, we want you to get up in another few minutes to attend to your loo, attend to your baby, start breastfeeding the baby, start your core exercises, everything. And for cesarean, obviously, for 8 to 10 hours, still you are out of that anesthesia effect, जो बेहोशी दी जाती है स्पाइनल, आप उससे बाहर आती हैं. आपकी लेग मूवमेंट्स हम बेड पे ही शुरू कर देते हैं. एंड लेट मी टेल यू, दीज लेग मूवमेंट्स, चाहे वो नॉर्मल है या सिजेरियन है, दे आर सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज प्रेगनेंसी इज ए स्टेट जहाँ पे क्लॉटिंग आपके ब्लड की बहुत ज्यादा होती है. एंड द मोमेंट यू गेट डिलीवर्ड, ये क्लॉटिंग का फैक्टर इतना ज्यादा होता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी, कि लेग के मसल्स में छोटे छोटे क्लॉट बनने की टेंडेंसी हो जाती है, जिसको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस या डीवीटी कहते हैं. एंड इट इज अ डिजास्टर्स कंडीशन which can happen even to a normal non medically fit person, जिसको कोई पीछे मेडिकल बीमारी नहीं रही हो, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हो. even in those females they can land up with this disastrous complication which takes a sudden toll. suddenly cardiac arrest हो सकता है, suddenly वो छोटे क्लॉट आपके ब्रेन में जा सकते हैं, एंड दे आर वेरी डेंजरस. एंड दिस सिंपल मूवमेंट ऑफ लेग मूवमेंट्स, गेटिंग अप फ्रॉम द बेड as early as possible, mobilizing yourself will help you to prevent from such thing.
at the same time it will help you relax your muscles. आपके मसल्स टेंस आउट हो जाते हैं ड्यूरिंग दैट होल phenomena of जो labor है और after cesarean, because you are all exhausted up and mentally also tired कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं होगा. So you have to understand, and अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स और इतने सारी सोसाइटीज और हर हेल्थ केयर पर्सनल आपको ये बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या है और कैसे करना चाहिए. सो ट्राई टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स, डोंट गो बाय द मिथ्स एंड डोंट फील स्केयर्ड. आप अटेंड कर रही हैं किसी क्लिनिक को, दैट इज सो गुड, बट ट्राई टू listen to what they say and try to then do whatever they are advising you to do. Leg movements, आपका getting up immediately after normal delivery, उठिए, half an hour में अपना washroom attend कीजिए, बेबी को attend कीजिए, mobilize रहिए. That's so good, so goes with the cesarean. After the effect of anesthesia go away. तो एक और मिथ आपसे मैं क्लियर करना चाहूंगी कि बेदिंग के बारे में आपकी क्या राय है? बिकॉज कुछ लोग छठी पे नहलाते हैं, कुछ लोग स्टिचेस के साथ 6 हफ्ते ही नहाने को नहीं बोलते हैं. तो इसके So बारे true, में आपकी ma'am. क्या? So true. So it is again that that bracket of over caution and over care for her wound. But she has to understand आपका जो body hygiene है, that is so important to help you to recover from the wound itself. आप अगर अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं, जैसे वजाइनल डिलीवरी में नीचे स्टिचेस है एपिसोड में, आप अगर उसका हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, यू आर इनवाइटिंग मोर ट्रबल टू योरसेल्फ, क्योंकि वहां पे डिसॉल्विंग स्टिचेस है. आप बात नहीं लेंगी, आप धोएंगी नहीं, आप सोप नहीं अप्लाई उस पर करेंगी, जस्ट फ्रॉम द स्किन की सोप अप्लाई किया तो कुछ हो जाएगा. तो क्या होगा, आपका जो वहां पे ब्लड है, फीसिस है, यूरिन है, आपके सैनिटरी नैपकिन के फाइबर्स स्टिक ऑन रह जाते हैं, आपकी बॉडी सिक्रीशंस रह जाती हैं, दे स्टार्ट smelling foul or they start creating nuisance there, और आप secondary infection invite करके आपके stitches को soil करके then they give away. तो आप इतना painful condition में खुद को land up करना चाहती हैं. Cesareans में अभी there are the washproof dressings which really is a blessing for the patient, so then the patient can have a bath without the fear of getting the wound wet. Otherwise जहाँ पे available नहीं है तो we ask them कि wound पे कुछ लगा के आप बैठ के let your फैमिली अटेंड टू इट, आप पीछे से बात ले लीजिए, लेग्स वगैरह अच्छे से वॉश कर लीजिए. सो बाथिंग का प्रैक्टिस तब भी वही था हमारा, मतलब बैकडेट में एल्डर्स यूज्ड टू अवॉइड, क्योंकि उस समय बहुत अच्छे एंटीबायोटिक्स नहीं होते थे, बहुत अच्छी चीजें नहीं होती थी सपोर्ट करने के लिए पेशेंट को रिकवरी के लिए. बट अब ऐसा कुछ नहीं है. सो वी हैव टू चेंज ओवर, वी हैव टू इवॉल्व विद आवर प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द थिंग्स एज दे आर नाउ. इट्स नॉट रॉन्ग कि हम उनकी चीजों को फॉलो करें, बट उनमें जो हमें चेंजेस लानी है अकॉर्डिंग टू द बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड द बेटर फैसिलिटीज, वी शुड डू दैट. वी शुड नॉट ट्राई टू सॉइल जो उन्होंने किया उसको हमें दैट एक गलत एंगल से नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए एंड स्टार्ट लैंडिंग अप आवरसेल्फ इन ट्रबल्स व्हाइल ब्लेमिंग द डॉक्टर कि डॉक्टर ने कहा नहा लो, पानी डाल दिया. अरे पानी डाल दिया तो उसको वाइप भी करो, ड्राई कर लो, डोंट लेट इट वेट देयर. We are not asking you कि तुम उसको गीला रहने दो. It's like wetting your out, but then dry it completely और it's okay, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ड्राई होके क्यों कोई इशू होगा आपके स्टिचेस से, सोप या वाटर से. सो इट्स नॉट कि आपने वहां डेटॉल लगाया, बीटाडीन लगाया तो ही वो हेल्दी रहेंगे. डेटॉल बीटाडीन तो एंटीसेप्टिक है, कोई इन्फेक्शन हो तब रिकमेंड किया जाता है. अनलेस अनटिल वो नहीं है तो आप वो क्यों लगाना चाहती हैं. पहले आप नॉर्मल हाइजीन मेंटेन कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है अटेंड योर हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड देन डू व्हाटएवर ही और शी सेज टू इट. बहुत डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज टू मेक देम हैव अ प्रॉपर बाथ मैम. मतलब यू मस्ट बी फेसिंग योरसेल्फ कि कितना सारा बिल्कुल दे कैरी द होल थिंग ऑन देयर बोन्स. एक और मिथ जो बहुत ही मुश्किल टू बीट है कि वो अपना सिर लपेट लेती हैं और कान लपेट लेती हैं. फैन घर में अलाउड नहीं है, एसी भी बहुत सारे घरों में अलाउड नहीं है, तो इसकी क्या जरूरत होती है, कुछ क्लियर करें आप. अरे see this is the thing, ये जो poor ventilated rooms में रखा जाता है कि एयर का सर्कुलेशन नहीं हो. This was again way back कि उस समय बहुत अच्छे एंटीबायोटिक्स नहीं होते थे and the things were not faced, people were carrying too many infections, तो it used to limit that infection travel to the patient. But considering now when we have so many good facilities and in addition to it हमारा जो आगे पीछे का environment है, जो atmosphere itself, it's not just a pollution that is there, but itself it is carrying so many infections in form of bacteria and viruses कि
घर में किसी एक को कोल्ड हो जाता है, आप कितना ही दूर उससे रहें, इनवेरिएबली सारी फैमिली को इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है, आप कितना ही हवा का वेंटिलेशन बंद करें। रादर आप वेंटिलेशन बंद करके इंश्योर कर रहे हैं जो वो खराब बैक्टीरिया है वो और ग्रो हो जाए। यू आर नॉट अलाउइंग द एयर टू सर्कुलेट टू एग्जैक्टली टू टेक दैट आउट। अब अभी पोल्यूशन है तो सब वो एयर प्यूरिफायर्स एंड बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है। व्हाट डज इट कैरी? इट कैरीज द सेम सेंस। यू हैव टू कीप सर्कुलेटिंग द एयर टू लेट द फ्रेश एयर इन एंड लेट द सॉइल्ड एयर और जो ब्रीद आउट एयर है उसको मूव आउट करें ताकि बच्चे और माँ को इन्फेक्शन कम से कम हो। सो यू आर डूइंग द अदर वे राउंड। मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? यू आर नॉट ट्राइंग टू अचीव ए सेफ जोन टू मदर एंड द बेबी। सो जस्ट अगेन गिव इट अ थॉट और थोड़ा सा अपने आप को और पोरस करके सोचिए, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली दे यूज टू से एंड फॉलो दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो वो फॉलो करना चाहते थे टू मेक मदर एंड बेबी सेफ। सो इट इज नॉट स्टॉपिंग द एयर सर्कुलेशन, कान में हवा गई तो इट यूज टू बी देन, बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू कीप इवॉल्विंग आवरसेल्व्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अपने ये मिथ से बाहर आइए। गर्म पानी पीना, अपने आप को लपेट के रखना, मोजे लगाना है जून की गर्मी में, क्यों लगाने हैं मोजे? ऑलरेडी यू आर स्वेटिंग, आप और फ्लूइड लॉस करेंगे तो क्या होगा? आपका फीट कम हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, यूरिन में इन्फेक्शन होगा। सो देयर आर सो मेनी ट्रबल फ्रॉम टॉप टू टो यू आर इनवाइटिंग योरसेल्फ इन। So please, I request every family to reconsider what they want from the mother and the baby. You know, they force upon the things on her. They make her scared. तुम नहीं करोगी तो ऐसे हो जाएगा. And she's like, सच में हाँ ऐसे ही हो जाएगा. So she will not speak out for herself. Even if she is a very literate person who has seen people getting really in trouble from all this. वो मालिश करवा दो और मालिश करवाने में we have seen the wounds rupturing, बड़े बड़े हेमेटोमा बनते हुए, बट नहीं मालिश करवानी है। अरे भाई तुम एक्सरसाइज तो करना शुरू करो, वॉक तो करना शुरू करो। और ये ब्लीडिंग काफी लंबे समय तक चलती है डिलीवरी के बाद, कितने दिन तक चलती है और कितनी ब्लीडिंग को हम नॉर्मल कहते हैं और कितनी को हम कहेंगे कि ये एक्सेस में हो गई, आप डॉक्टर के पास जाइए? सो मैम देखिए, जैसे ये 6 वीक्स का पीरियड हैज बीन डिफाइंड जिसमें द थिंग्स आर गोइंग टू गो बैक टू देयर नॉर्मल प्री प्रेग्नेंट स्टेट। So ये 6 weeks के टाइम में जो bleeding है, it will go on decreasing with each day, and the type of the bleeding or the color of the discharge will go on changing from bright red to altered red to brownish to a bit pale yellow, then yellow, and then थोड़ा सा whitish होके disturb हो जाएगा। But in case आपका ये जो period bleeding का pattern है, it changes to more brighter with clots, with at least using a single pad in an hour बिल्कुल soak हो जाता है, या you are using more than 6 pads in a day, and with this there is some cramping, there is pain in your lower tummy, or there is tenderness, or you are having a fever. So all these things indicate that pattern of the bleeding is not safe. What the notion carrying the female कि मुझे तो bleeding ही नहीं हो रही है, so that is a good sign. Bleeding नहीं हो रही है, that means everything जो पोस्ट बेबी के हमारा रेमिनेंट्स होते हैं प्लेसेंटा में, दैट हैज ऑल बीन क्लियर्ड आउट, यू आर मेंटेनिंग योर न्यूट्रिशन, यू आर टेकिंग योर एंटीबायोटिक्स, सो द थिंग्स आर वेरी फेवरेबल देयर. The whatever the lining of the uterus, it can carry infection very easily. So if everything is going fine, bleeding is not excessive, that means the lining of uterus is recovering itself very well without undue stress or undue kind of presentation with bleeding, infection, or with pain and fever. So you don't need to have an excess bleeding to feel good about yourself. Excess bleeding or with pain, it is always alarming. Go and immediately attend to your healthcare personnel. Don't wait for it. But कम bleeding है, कोई pain नहीं है, कोई discomfort नहीं है, and it gradually starts decreasing till 6 weeks is a good sign. After 6 weeks, whatever cycle will you have, that will be your menstrual cycle. जो भी bleeding आता है 6 weeks के बाद, that comes as your menstrual cycle, first menstrual cycle. जो 6 weeks में हो रहा है, they are not your menstrual cycle because still the uterus is regaining its pre-pregnant state. सो ये बेबी ब्लूज क्या होते हैं? क्योंकि एक अब ये रियलिटी है, शुरू से है रियलिटी, तो मुझे लगा कि थोड़ा फैमिलीज को हम सेंसिटाइज करें, ये क्या होते हैं और कब हमें इनके बारे में डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए और कैसे हेल्प वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सही बात आपने मैम उठाई है। ये बेबी ब्लूज अर्लियर फैमिली यूज्ड टू से कि नहीं कुछ नहीं है, स्ट्रेस में है इसलिए ऐसा कर रही है, कोई बात नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पीरियड, दिस न्यूबॉर्न का आना एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस तो है, बट इट इज along with the turmoil of your hormones which predisposes a female to a feeling of
loneliness, emptiness, थोड़ा crying spells, mood swings, नींद नहीं आना because the whole routine is disturbed. नींद नहीं आती है, she feels fatigued out, she feels irritable. Sometimes this goes to the extent that she doesn't want to take care of the baby at all. So they are all postpartum blues, and it's an important part of her demand for some counseling from either her own healthcare person or counseling and communication within the family itself. We have to accept that she is getting disturbed to the extent that उसके अपने health और family baby पे effect पड़ने वाला है. So please don't overlook this. Usually ये postpartum blues settle हो जाते हैं within 3 to 5 days of delivery, maximum 1 week. But in case they persist for another 2 weeks, this will even threaten that she may have the feelings of harming herself or to the baby to the extreme. So it needs immediate medical attention. जो medical expert है उनसे मिलना पड़ेगा. Sometimes it needs medication, doesn't matter. The early it starts, the more better control it is, and the more lesser duration of the medication is required for the female. So every female is a new patient in itself. We cannot compare कि इसकी बहन का तो ठीक से हुआ तो इसका क्यों नहीं ठीक से हो रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. Every female is an entity in itself. We have to attend to her requirements. So that emotional turmoil along with the hormonal disturbance and the changes, if it predisposes her to such sort of mental stress and depression, definitely she needs to attend to a medical expert. It's a very important thing for the families especially to recognize, क्योंकि patient कभी कभी खुद इस चीज को पूरी तरह समझ ही नहीं पाता है, बता ही नहीं पाता है. बट द क्लोज फैमिली पार्टनर उसके एक्टिविटी से जज कर सकते हैं. इमीडिएटली उसको किसी से दिखवाइए. आप अपने हेल्थ केयर पर्सनल गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए. ही और शी विल गाइड यू वेयर टू गो फर्दर एंड हैव द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट फॉर इट. ठीक है. इसमें मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि जब मदर्स इस टाइम पर पहुंचती हैं तो क्या उनको सप्लीमेंट लेना जरूरी है? हाँ जी मैम. हाँ, जैसे हमने अभी मदर की हेल्थ की कंप्लीट हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, इसके साथ हमारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होना भी जरूरी है. बिकॉज our diet, especially जो Indian food है, that goes deficient in replacing especially the iron and calcium, जो हमारे nutrients रहते हैं, कहीं ना कहीं ये deficient रहते हैं. And considering the fact that mother का bleeding भी रहता है, lactation भी है, उसको physically recover होना है while balancing her activity of lactation. So this all needs some additional nutritional supplements जो iron और calcium के form में दिए जाते हैं, और definitely she should take it for at least 3 months till the whole lactation period. And once the baby starts on the top of it, then it's her choice to continue or not continue करती है. Nothing like it. It's always good. हमारी diet deficient रहती है calcium intake में. So replacing that with these nutritional supplements, especially in the Asian scenario and in our Indian setup cooking, is always welcoming to have her strong muscles and bones later also. It's not just the lactation part she has to face. आपको बाद में बेबी को भी अटेंड करते रहना है. सो इट्स इनवेरिएबली द मोमेंट एक बार डिलीवरी हो जाती है, पेशेंट कीप्स कंप्लेनिंग मेरे के तो बैक एक हो गई, मेरे से तो खड़ा नहीं रहा जा रहा है. सो व्हाट्स इट अबाउट, ऑल अबाउट, आप डेफिशिएंट हो रही हैं एक्सरसाइज में, आप डेफिशिएंट हो रही हैं अपनी डाइट सप्लीमेंट्स में, आप डेफिशिएंट डाइट में हो रही हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप एक प्रॉपर बॉडी कंपोजर मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, विच इज लैंडिंग अप विद ऑल द ट्रबल. ऑल्दो दे कीप ब्लेमिंग, मेरे को तो सिजेरियन का इंजेक्शन लग गया इसलिए हो गया, मेरे को तो डिलीवरी में ऐसा, नॉर्मल डिलीवरी में इस तरह से हुआ. सो डोंट ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूजेस विद योर हेल्थ. Try to follow the advices which healthcare personnel gives, or what our platform is trying to at least show you. Go and discuss it with your gynecologist so that you feel good about yourself. It's not only after 6 weeks of delivery, but even beyond that, attending to your baby and then going for a second pregnancy. You should be healthy enough. सही बात है. तो मैं ये जानना चाह रही थी कि क्योंकि चेंजेस इन द बॉडी तो होती हैं आफ्टर डिलीवरी, एंड फीड भी कर रही हैं मदर्स, तो वो इस चीज को कि नहीं मैं फीड कर रही हूँ इसलिए मुझे अच्छा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, ये करते हुए वो डाइटिंग और एक्सरसाइज टू लूज वेट नहीं शुरू करते हैं. आप बताएंगे ये कौन सा ऑप्टिमम टाइम है जब वो ये काम शुरू कर दें ताकि वेल इन टाइम वो फिट हो जाएं और लंबा उनको कोई प्रॉब्लम ना हो.
बिल्कुल ठीक है मैम. ये जो बॉडी चेंजेस हैं, दे आर द टेलटेल साइंस ऑफ 9 months ऑफ द जर्नी टू प्रेगनेंसी. सो वन हैज टू एक्सेप्ट कि इट इज नॉट अ ओवरनाइट डिलीवरी होगी एंड देन द मदर इन लॉ सेज इसका तो पेट अभी भी निकला है डॉक्टर साहब. अरे तो पेट कहाँ जाएगा, यूट्रस छोटा हो रहा है. फिर तो इट्स द टोनिंग ऑफ द मसल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट. फॉर द फर्स्ट 6 weeks जैसे आपको बताया है, जो बॉडी कोर एक्सरसाइजेस है, आपकी डेली मूवमेंट है, उसी मूवमेंट को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है. बिकॉज आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इज गोइंग टू बी स्पेंट विद द बेबी, feeding the baby, changing for the baby, and rest of the things for the baby. So try to at least attend to those basic simple exercises. And once that 6 weeks period is over, you have your checkup with your healthcare person and you are said okay, you can attend to all your gymming and routine. आप swimming सब कुछ कर सकते हैं, aerobics कर सकते हैं. There is no issue अगर आपके healthcare personnel ने आपको okay दे दिया है. इवन अगर आप उसके पहले भी थोड़ा बहुत करना चाहती हैं, लाइक योगा में कुछ ऐसे आसन से होते हैं, दे आर वेरी बेसिक एंड सिंपल एंड नॉट वेरी एग्जॉस्टिव. यू कैन स्टार्ट डूइंग दोस टू strengthen your muscles. Especially the Kegels exercise, we advise them to start doing immediately after delivery. Kegels is the exercise which will strengthen your muscles around the vaginal opening and your perineal, around the anal opening. So this exercise is a must to be done immediately so as to nourish those muscles back again to their tone which originally it was and which is damaged during a delivery process. Normal delivery as well as cesarean. Cesarean में भी उतना ही stress आता है while we are taking the baby out. So it's very important to do those exercises. Then there's a bridging. Bridging is to not only to help you to support your back muscles, but they will at the same time, because you are lifting your back, so some part of your abdominal muscles also get taut. So it will help you to tone again back your abdominal muscles. So the 6 weeks time is over with these exercises, then go back and you just shoot whatever physical activity or your gymming health personnel tells you to do to weight loss. But do understand, don't keep a comparison कि मेरी friend ने इतनी देर में weight loss कर लिया तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है with the same that profile of exercise and physical activity. Everybody has its own metabolism, has its own reflection. So don't get depressed कि नहीं हो रहा है. Keep doing it, keep doing it. Definitely you will achieve that. हर किसी का resistance और एक productivity अपनी body का अपना होता है. Don't start comparing. That comparing itself gives you that guilt, and then whatever you are doing, you are even lacking with that. And definitely diet का तो आपने बताया ही है. मैं तो no fat को avoid कीजिए, sugars को कम कीजिए. You will achieve back to your definitely not 100%, but हाँ. करेंगे. एक क्विक क्वेश्चन आपसे पूछना है, बड़ा टैबू सा क्वेश्चन है ये इंडियंस के बीच में, but I wanted to ask on this platform, when to resume sexual activity after birth of a baby, and with contraceptives or no? Ma'am, definitely sexuality is another part of human life which has to be regained back. So after 6 weeks of your checkup, if everything is fine with your wound recovery, everything is fine, your physical health, definitely you can resume back your sexual activity. And you have to ensure you have to use a contraceptive, because this lactational period will have an irregular effect on your menstrual cycles. You may not have menses at all, which is known as lactational amenorrhea, but this period carries equal chance of reproducing an egg and conception, which you will escape out totally if you don't have periods. So please do use a contraceptive during that intercourse immediately after 6 weeks of delivery. To begin with, we advise you to put on the barriers, condoms, and then once the baby is on top feed, 3 months later, you can be given more effective oral contraceptive pills, or you can opt for intrauterine contraceptive device or copper T. And some pills, low dose pills are there which can be taken during this lactational period even. But you have to go and meet your personal and have the whole counseling and then choose yourself. But according to your medical needs and according to your improvement after the delivery. This is a very good point that yes, she can resume back. Yes. So thank you, Dr. Amrita Razdan Kaul, for joining us today. Could you show us the certificate, please? Thank you, ma'am. That will be all for today. Dr. KK Med Talks will be back tomorrow at 7 p.m. with another edition of the show. Keep watching Dr. KK Med Talks. Namaskar. And happy Diwali. Yes.